Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 17th September 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper. So these are the important articles for our examination for mains purpose and the page number on which the articles have appeared in the Hindu newspaper. So let us take one by one. First article on page number 6, editorial page. Very good article by Rajiv Bhargava. Earlier also we have talked about some important writers and their articles are very good and very important for our examination, like Rajiv Bhargava. He writes regarding, let's say, social justice, governance, political aspects, ethics और कुछ एस्पेक्ट जो है हमें एस्से में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो लाइकवाइज दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटी और गवर्नेंस, इवन द फेडरलिज्म कंसेप्ट एंड इवन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड एट द सेम टाइम. दोज हु आर हैविंग PSR ऑप्शनल उनके लिए नेशनलिज्म कंसेप्ट, फेडरलिज्म कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Fine. So let us try to understand what the article is talking about. The context of the article is saying that deteriorating center-state relationship, or we can say the weakening of federalism concept at present, and how the historically the federalism has evolved. Let's say before independence also and after independence. तो ये center-state जो relationship है वो कैसे evolve हुआ है through various kinds of nationalism concept. ठीक है, दोनों बहुत एक दूसरे के लिए लिंक्ड है ऐसा आर्टिकल बोल रहा है. एंड लेट अस ट्राई टू टेक इनपुट फ्रॉम दिस आर्टिकल. Okay, so in the first part it is giving the context of recent problem of GST shortfall, and some states are bargaining with the center that the central government should let's say come up with the option that is the central government directly should pay these shortfalls of GST revenue. तो ये तो जो है वो बोल रहे हैं आर्टिकल में कि इट इज़ टिप ऑफ आइसबर्ग. द रियल प्रॉब्लम लाइज इन द फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. Very good statement here. It is given federalism can function only in the hands of those with the grasp of Indian democratic nationalism. Both are indispensable and neither works properly without each other. Nationalism, democratic nationalism and federalism it is talking about. Okay, so unless and until the central government follows the democratic principles, or we can say the constitutional principles, the working of federalism will not happen properly. So it is giving the background of three kind of nationalisms that evolved, two before independence and one immediately after independence. Let us try to understand them. Three kinds of nationalism. First is in ethno-religious nationalism, developed before independence in 1930s and 40s. It got, we can say that more focus during, let's say, Indian national freedom movement. So yes, the idea that community with a strongly unified culture must have single state of its own, bifurcated into two nationalisms. Now the article is focusing on Hindu nationalism and Muslim nationalism that got focused during those decades. Hindu Mahasabha let's say focused on Hindu nationalism and Muslim League focused on Muslim nationalism at that time. So it is focusing on strongly unified culture, and that is having single state of its own. Fine. So in 1940s, however, it got, let's say, reduced. The focus got reduced on it, and the new kind of nationalism, that is civic nationalism, a shared historical experience and struggle against British colonial rule, and developed through the interpretation of ideas emanating from different cultural sources. So more inclusive than ethno-religious. It is secular. Composite content is qualitatively different from Hindu and Muslim nationalism. A civic Indian nationality identity shaped at best by thin composite culture trumps other public identities, including linguistic one. So basically this was, let's say, promoted by Jawaharlal Nehru and his associates during that time. ठीक है, कि डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म ये जो कंसेप्ट लाया गया है, या सिविक नेशनलिज्म जिसको बोला गया है, दिस सिविक नेशनलिज्म वाज इन फोकस ड्यूरिंग दोज डिकेड 1940s में, जब हम इंडिपेंडेंस के लास्ट फेज में थे. तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के लास्ट फेज में सिविक नेशनलिज्म एमर्ज्ड, एंड दैट वाज सेक्युलर. एंड नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर फोर्सेस टू कंटिन्यू दिस सिविक नेशनलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंग्विस्टिक जो हम बोल सकते हैं आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक सिविक इंडियन आइडेंटिटी जो होनी चाहिए, ऐसा नेहरू जी हमेशा बोलते थे. एंड दैट्स व्हाई ही वाज लेट्स से स्केप्टिकल अबाउट आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स
ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और बहुत सारे यहाँ पे आपको पूरा बैकग्राउंड दिया गया है कि कैसे कैसे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज लाइक जेवीपी कमीशन और धार कमीशन, ये सारे जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में बताए गए, एंड हाउ दीज कमिटीज इन द एंड कम टू लेट्स से कंक्लूजन दैट द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स does not weaken the, we can say that, federalism or we can say the unity of the country, rather it strengthens। ठीक है, ऐसा इस पैराग्राफ में काफी अच्छे से बताया गया है। like we can say that here we can still zoom in here, just a moment, yes। So the article here, it is talking about that the justice requires the creation of partially self-governing states that recognize all major linguistic groups. Besides, their creation improves administrative efficiency, deepens democracy, and alleviates anxieties of regional minorities induced by fear of linguistic domination. Since the domination eventually invites resistance and conflict which undermines the nation states, only federalism can block the language based majoritism and contain conflicts and strengthen Indian nationalism. Only coalition nationalism creatively combines claims of unity with claims of recognition of diverse culture. So basically the article here saying that third type of we can say nationalism, that it is saying कोलिजेंट नेशनलिज्म। ठीक है, तो कोलिजेंट मतलब क्या होता है कि कमिंग टुगेदर टू फॉर्म वन मास या एज अ होल। ठीक है, so this is called as coalition nationalism here, developed after independence. It accepts nourished by the distinct territorially concentrated regional cultures and designed states of their own, and also educational, legal, and we can say that yes, and other institutions, they possess self-governing rights. So basically it is talking about the strong linguistic federalism. See here, it is consistent with fairly strong linguistic federalism. Fine. So this coalition nationalism has served India well. आप देख सकते हैं कि इसके बाद जैसे जैसे स्टेट्स तैयार हुए हैं, बहुत सारे, पहले आंध्र प्रदेश का जो डिमांड था, देन वी कैन टॉक अबाउट लेट्स से डिवीजन ऑफ बॉम्बे स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात तैयार हुआ, उसके बाद हरियाणा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब। ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए, दे वर्कड वेल फॉर इंडिया, सो इट स्ट्रेंथन्ड यूनिटी, you can say the concept of unity in diversity. Fine. Yes, benefiting several groups in India. True, it has not worked as well in India's border areas such as Northeast and Kashmir. ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं हुआ है। However, it is saying that ये वर्क होना चाहिए, but their problems can only be resolved by deepening, not abandoning कोलिसेंट नेशनलिज्म। तो इसको डीपन करना चाहिए कोलिसेंट नेशनलिज्म को, सेंटर शुड वर्क ऑन दैट। इंडीड द इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट व्हेनेवर द सेंटर हैज बीन नॉन मैनिपुलेटिव, ट्रीटेड पॉलिटिशियंस एंड पीपल ऑफ रीजनल स्टेट्स विद रिस्पेक्ट, द एंटायर पॉलिटी वर्क्स स्मूथली। ऐसा जब हुआ है, then we can say that initial years when the country was led by Nehru, so he had all these qualities in initial, we can say 10 to 15 years, and we can say that the polity worked very smoothly at that time. The contemporary crisis of federalism is due to attack on coalition and democratic Indian nationalism by the conceptually limited and morally weak idea of Hindu nationalism. Fine. So yes, at present what is going on by the, we can say that at the central level, that is, we can say the conceptually limited and morally weak idea of Hindu nationalism is dominating this coalition and democratic constitutional, we can say nationalism concept. So in conclusion, basically the same we can say article or a statement that is written here, that since the domination eventually invites resistance, जहाँ जहाँ डोमिनेशन होता है इवेंचुअली वहाँ रेजिस्टेंस होगा ही,
बेसिकली इट इज गिविंग द कॉन्टेक्स्ट, जैसे कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश होती है, या फिर इसका बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि लाइक डोमिनेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द साउदर्न स्टेट, देयर विल बी रेजिस्टेंस फ्रॉम द साउदर्न स्टेट, ऐसा एक्चुअली इसका बैकग्राउंड है, ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. Conflict which undermines the nation states, only federalism can block language based majoritism, contain conflicts and strengthen Indian nationalism. ठीक है, ये जो language based majoritism, हिंदी language की बात हो रही है, conflict center state की बात हो रही है, and strengthen Indian nationalism. Only coincident nationalism creatively combine claims of unity with the claims of recognition of diverse culture. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट जो है हमारा इंडिया ने ऑलवेज फोकस किया है, सिंस वी कैन से दैट टाइम इमोमेरियल वी आर फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई द प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड आल्सो वर्क ऑन दिस टू इम्प्रूव द, वी कैन से दैट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, या फिर गवर्नेंस की बात जो हम करते हैं. सो इस तरीके से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी, लाइक द फेडरलिज्म. सो हियर the question, federalism can function only in the hands of those with the grasp of India's democratic nationalism. Both are indispensable and neither can work properly without each other. Analyze the statement with reference to recent developments in center-state relationship in India. ठीक है, तो ये सारे बैकग्राउंड 3-4 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए. कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, लैंग्वेज का जो अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात हो रही थी, ऐसे 3-4 आपको इंसिडेंट्स पता होने चाहिए, डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए. जीएसटी का एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो यस, बाय गिविंग दिस एग्जांपल्स यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेल. So yes, beyond the barriers of disability, the next article on page number 7, so it is talking about the inclusive development, okay, or social justice it is talking about. So जो differently able people होते हैं उनका actually development process में mainstreaming of them in the development process is very much important. Some important facts and arguments are given in the article. For example, based on recent estimates, over 1 billion people worldwide are impacted by disability and stigma surrounding it. According to WHO, nearly 15% of world population has some or other kind form of disability, making it disabled people largest global minority. Very good fact, you can directly mention in essay also. GS1 सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, GS2 में सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आता है. यू कैन लेट्स से ऐड सच काइंड ऑफ फैक्ट्स. Continuous discrimination denies them equal access to education, employment, healthcare and other opportunities. Essentially, basically we are looking at an enormous reservoir of untapped resources excluded from the workforce. तो उनको include करना बहुत ज़रूरी है. The stigma attached to the persons with disability, compounded by lack of understanding of their rights, make it difficult for them to attain their value functioning. So अमर्त्य सेन ने जो capability approach दिया हुआ है, so it is focusing on that aspect, that the capabilities of those weaker section, marginalized section of the society should be improved, and so that they can attain their fully valued functioning. This is very important to improve their standard of life. Furthermore, the women and girls with the disabilities are at higher risk of experiencing especially sexual and other form of gender based violence. This is the reality, we can say that. जो हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे मेंटली वीक और वी कैन से डिसेबल जो होम्स होते हैं, केयर, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि डे केयर सेंटर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोगों को वहाँ पे रखा जाता है, तो उनको जो है वहाँ पे जो केयर करने वाले लोगों वहाँ पे हैरेसमेंट हुई है. ऐसे बहुत सारे केसेस हमने पास्ट में देखे हुए हैं. ठीक है, विमेन एंड गर्ल. अबाउट 80% ऑफ एस्टिमेटेड 1 बिलियन पर्सन्स लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली लाइक इंडिया. द ILOs, द फैक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं कि हमारा जो नेशनल सेंसस 2011, इट सेज दैट 73% ऑफ द पीपल आर आउटसाइड द लेबर फोर्स. Okay, so yes, especially those with mental disabilities, women and those in rural areas are most neglected. COVID-19 pandemic has had its worst impact on marginalized communities. ये आपको पता होना चाहिए और ये आपने बार बार हाईलाइट करना चाहिए आपके आंसर्स में जब भी सोशल जस्टिस की बात होती है. फाइन. Yes, UNESCO's 2019 State of Education report acknowledged that inclusive education is the complex to implement and requires fine understanding of diverse needs of children.
ग्लोबली कुछ इनिशिएटिव्स आपको पता होने चाहिए कि यूनेस्को ज्वाइंड इट्स पार्टनर्स इन द ग्लोबल एक्शन एंड डिसेबिलिटी नेटवर्क ग्लैड. So this is important initiative at global level to raise the awareness about need to put place strategies to mitigate impact of schools closures on learners with disabilities. Global Action on Disability Network, GLAD. Fine. The implementation of groundbreaking National Education Policy 2020 provides historic opportunity to utilize the immense potential of we can say that those which are differently able people. So in conclusion, we can say a very good statement here. Pandemic has exposed the large cracks in the cracks of inequality, urging us ponder over our responsibilities towards each other. So yes, we know that, and that's why we have responsibility towards marginalized section, especially those differently able people, and therefore their capability should be improved. They should be mainstreamed into the development process, and the government has responsibility under social contract, we can say that, or we can say that welfare approach, welfare as a welfare state, they should work in this regard. Fine. So yes, paper 1 society, paper 2 social justice, and essay we can expect, and we can say that we can take input from this article. Moving on, some we can say that important development in terms of international relations. India Maldives relations, यहाँ पे देख सकते हैं कि apparently responding to growing anti-India refrain from the political opposition in Maldives, Foreign Minister of Maldives has said that those unable to stomach the strengthening of bilateral ties were resorting to such criticism. Actually anti-India campaign हो रहा है Maldives में, social media campaign by opposition parties, and yes, the government, or we can say the foreign minister, had said that the relationship between India and Maldives, this connection is with the people of two countries, a connection indicating heart to heart relationship, and we acknowledge that. Basically it is saying that the government is working with the Indian government, that both are in good terms, and yes, they want to cooperate, we can say that in the economic terms also. Given that during President Yamin's, जो पहले के president थे, times in the office, male New Delhi relationship turned rather sour, यानी कि मालदीव्स और इंडियन रिलेशनशिप जो है वो डिटोरिएट हो गए थे उस टाइम पे, एंड हिज लेट्स से गवर्नमेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ एविडेंट चाइना स्लैंड. तो बायस था उनका, चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाज मोर ड्यूरिंग दैट टाइम, बट ऑन द अदर हैंड इंडियाज एंगेजमेंट हैज सिग्निफिकेंटली ग्रोन सिंस प्रेसिडेंट सोली केम टू पावर. अभी जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट वो सोली, so he is in India's favor, and that is good thing, particularly in development partnership. So yes, ये कुछ facts आपको पता होनी चाहिए. In last month, India announced $500 million package, including grant of $100 million, in addition to New Delhi's earlier line of credit of $800 million announced in 2018. ठीक है, तो अभी right now it is facing very, we can say that severe blow because of COVID-19 pandemic, because almost all of its economy depend on tourism sector, which is completely closed at present because of COVID-19. So ऐसा बोला जा रहा है, by according to UNDP, the Maldives is among the worst affected countries in Asia region and potentially globally also due to impact of COVID-19. So yes, it is India's responsibility. हम देखते हैं कि हमारे जो इंडियन ओशन में जो भी नेबर्स है उसमें से मालदीव्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन इंडियन ओशन, देयरफॉर इंडिया मालदीव्स रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो यस, IR से रिलेटेड यू कैन हैव दिस इन योर नोट्स. नेक्स्ट important development in COVID-19. Yes, there were talks regarding Russia cooperating with India in development of the Sputnik 5 vaccine trials and we can say production. Now they have signed the agreement. Russian Direct Investment Fund RDIF, which is piloting Russia's Sputnik 5 candidate vaccine currently in phase 3 trials, has partnered with Hyderabad based Dr. Reddy's laboratories to test and subject to regulatory approvals supply 100 million doses of vaccine, of which reportedly half will be for India. तो फेज 3 ट्रायल्स के लिए और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 मिलियन डोसेस
they have signed the agreement with Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad based जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है इनका लैबोरेटरीज का. Yes, Sputnik 5 vaccine, which is based in well-studied human adenoviral vector platform with proven safety, it is undergoing clinical trials. We know about that. Now, this is the important second such agreements after, let's say, AstraZeneca, जो है British company, it has signed agreement with Pune-based Serum Institute of India. So, AstraZeneca is developing, we can say, vaccine in collaboration with, we know that Oxford यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है स्पुटनिक 5 का. ऑन अगस्त 11 स्पुटनिक 5 वैक्सीन डेवलप्ड बाय गैमेलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वाज रजिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रशिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन. ठीक है, स्पुटनिक 5. तो ये स्पुटनिक 5 जो है उनका हम बोल सकते हैं कि सैटेलाइट था और उसको उसका नाम दिया गया है वैक्सीन का. ठीक है, कोविड-19 बेस्ड ऑन द ह्यूमन एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो ट्रायल्स के रिजल्ट्स है वो 100% सक्सेसफुल है, ऐसा लैंसेट में उसका स्टडी जो है वो पब्लिश हुआ था सितंबर 4 को. तो यस, वी कैन से दैट अगर फेज़ 3 ट्रायल्स अच्छे से होते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर इंडिया ऑल्सो एंड इंडिया रशिया कोऑपरेशन इन वैक्सीन डेवलपमेंट. Fine. So this is, we can say that, important development in COVID-19. Next, environment related good development, especially every year during especially November month of winter, Delhi air pollution, Delhi and surrounding region air pollution is always in news, and stubble burning issue that the government is trying to, let's say, reduce the stubble burning in several states including Delhi, हरियाणा, पंजाब एंड यूपी, इन इवन इन राजस्थान. तो ये जो है उसके लिए एक सॉल्यूशन जो है पूसा जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. सो दिस हैज़ डेवलप्ड one technology. The product in the form of capsule has to be mixed in water and sprayed on the straw to decompose it. Now this is important development as a solution to stubble burning. We can say that the cost of spraying, it is the Delhi environment minister is saying that on the field will be borne by Delhi government. ये सिर्फ दिल्ली के लिए है, so that there is no financial burden on farmers. It is also saying that they will discuss with the state governments of Uttar Pradesh, Haryana and Punjab, so that they can coordinate on the implementation of this model in those states also. ठीक है, तो ऐसे ये आपको पता होना चाहिए कि पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया हुआ एक सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग. तो आप ये आंसर में लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो. ऑल्सो इफ़ यू वांट टू मेंशन इन द एसे, अगर पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई एसे आता है एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली, यू कैन मेंशन दिस इन वे फॉरवर्ड. फाइन, यस. सो आपको ये इनपुट्स लेने आना चाहिए आर्टिकल से या न्यूज़पेपर से, कैसे जो है आप ये मेंशन करके रख सकते हैं. दोज हु आर हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, एवरी ईयर देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम पोल्यूशन. तो या फिर दिल्ली पोल्यूशन से पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, या नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली पोल्यूशन होता है विंटर में. सो वी कैन टॉक अबाउट दैट एंड एज अ वे फॉरवर्ड यू कैन गिव दिस मेजर. And next article, yes, there is important development in Japan. The new prime minister has been appointed, Yoshihide Suga. So he pledged to keep the coronavirus infection under the control and kickstart the economy that is in recession. So basically he was a long time advisor of Shinzo Abe, the earlier prime minister who resigned recently because of ill health. Okay, so Mr. Suga has said that his run was inspired by desire to continue his predecessor's policy. So basically he was implementer earlier of decisions of we can say earlier prime minister. Now he wants to follow all the policies of earlier prime minister. He said that he would seek continued strong ties with Washington, USA and stable relations with China and Russia. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है. And we can say that we will have follow up on India-Japan relationship, ये कैसे आगे develop होता है. Fine. So important captions and quotations, very good captions in today's newspaper. From the first article, federalism से related जो article था,
वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ये फर्स्ट टू, एंड देन द पैंडमिक एंड स्टिग्मा, ये जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड, द आर्टिकल वी टॉक्ड अबाउट फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट है, आपने ऐसे में भी यूज़ करने चाहिए ये कैप्शंस। फाइन, so these were important articles from today's The Hindu newspaper. For further information on editorial discussion classes or ED classes wherein in-depth analysis of mains related issues from current affairs or contemporary topics is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IS. Thank you.